Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss an example for the correlation in which group data is given. Reference book is given and page number 426 is consulted. A problem 10.26 is taken. Compute correlation coefficient between weights and heights of students. Weights and heights, so one variable is x, other is y. So these are the variables and data is given this one. We can see that x is the weight. Weights are 90, 110 up to 190 kgs. And y is actually height, and heights are measured in inches. So first of all, we have to compute u and v. U is taken along x and v is taken along y. In u, the central value is, for example, this is our a. So x minus a. So u is x minus 130. So first value is of u is 90 minus 130. One more thing, that all values are multiple of tens. So we have to divide it by h, the common difference, that is 10. So u is x minus 130 divided by 10. Okay, so this is divided by 10. So first value is 90 minus 130 divided by 10 or 20. It's possible to write here 20. So it's all up to you. So 90 minus 130, answer is minus 40 divided by 20. So it's minus 2. So we will write here as first value is minus 2. Okay. The second value is now 110 minus 130 divided by 20. So numerator is 20, minus 20 over 20. So it is minus 1. So write it here as minus 1. Here it's 0. It must be 1. It must be 2. And this is 3. Because all values of x are given evenly distributed. So next is, for this example, this is the assumed value. So v will be y minus 63. Okay. So first value of v must be 0. The common difference is 3. So first value is here 57 minus 63 divided by, so answer is actually 6. So we can write here as 2 or maybe 3. If it is 3, so divided by, total answer is 2. So we will write here minus 2. The first value of b is minus 2. Next value 60 minus 63 divided by 3. So answer is, it's minus 1. Okay. Next is 1, 2 and 3. Now we have computed x, u and v parallel to x and y. And in the body of this table, all these values are frequencies. In the next step, we have to compute fu, fv, fu square, fv square, and along with this fuv. You can observe that f is computed first, in which frequencies are going to be added column wise and row wise. Okay, so totals are 12
and 1 and so on. Okay, these are the frequencies. And total is from both sides, the total is same, that is 282. Next column is FV, which is computed. F is given here. ठीक है जी, इस कॉलम में आपको F दिया हुआ है और ये आपने जो V कंप्यूट किया है, आपने देखा यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर्स नहीं लिया था। आपकी मर्जी, अगर आप लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सब वैल्यूज़ को 3 पर डिवाइड कर देंगे तो भी ठीक है, और अगर नहीं किया तो भी कोई मसला नहीं, तब भी आपका रिजल्ट सेम रहेगा। तो V को F से मल्टीप्लाई किया तो FV का कॉलम आ गया, और FV के कॉलम को ही दोबारा V के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो FV स्क्वायर आ गया। या फिर आप यूं कर लें कि V स्क्वायर पहले कर लीजिए और फिर F के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट्स अप टू यू, ठीक है जी। और ये इस तरह FV स्क्वायर आ गया। और इस सब के साथ साथ आपको FU और FU स्क्वायर, ये दो भी रिक्वायर्ड होंगे। इनके टोटल्स आपने कैलकुलेट कर लिए, ये आपके पास टोटल्स हैं। एक्चुअली ये 5 वैल्यूज़ ही हमें दरकार हैं, ठीक है जी। ये समीशंस 1 2 3 4 5, और एक और जो आपको FUV कंप्यूट करना है, ठीक है जी। चूंकि यहाँ स्पेस कम थी, मैंने सब में बॉक्सेस नहीं बनाए। आप इसको ना भी बनाएं, लेकिन आप अलहदा से भी कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे कंप्यूट करेंगे? जहाँ जहाँ फ्रिक्वेंसीज अवेलेबल हैं, जैसे कि आप फर्स्ट रो में देखिए सिर्फ 1 अवेलेबल है। अब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस 4 के साथ और इस -6 के साथ, तो आपका पहला FUV आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने कहाँ से कंप्यूट करना है? F जहाँ पर अवेलेबल है, यानी 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस -4 के साथ, और इसके पैरेलल जो है इसमें u की वैल्यू -3, यानी -4 -3 और 8, इसको कंप्यूट करेंगे और सेकंड FU आ जाएगा। और इन सब FUs को जो आपने कंप्यूट किए हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट वैल्यू आपने इस तरह लिखी -6 4 एंड 1, नेक्स्ट -4 -3 8। जहाँ जहाँ फ्रिक्वेंसीज अवेलेबल हैं उनके UV जो है ना आपने ले लेने हैं और उनको मल्टीप्लाई करते जाना है और सबको ऐड कर लेंगे, तो आपको फाइनल वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ये फार्मूला आपके पास कोरिलेशन का है। इस कोरिलेशन के एक्सप्रेशन में आपने तमाम समीशंस उस टेबल से देखकर इसमें सब्स्टिट्यूट किए, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आया R = 0.39। ये 0.5 से भी कम है, ठीक है जी। इसका मतलब है ये पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है जी, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन इसमें जो आपका स्कैटर प्लॉट है वो इस लाइन से बहुत क्लोज नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे ये स्कैटर प्लॉट इस लाइन के क्लोजर आता जाता है तो हम कहते हैं कि जी स्ट्रांगली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। लेकिन आपके केस में इसका रिजल्ट है 0.39 या 0.4, यानी 40% इसमें कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। तो X and Y are there is weak correlation between X and Y, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। थैंक यू।